ये मेरी जिंदगी थी। हाँ. ये मेरी लाइफ चल रही थी. आफ्टर स्कूप इट्स टेकन अ 360 टर्न. मतलब आई हैव टू जगल, इट्स माय वेडिंग एंड आई एम लाइक ओ गॉड. This is the scoop. This is the scoop, guys. You know, as a girl in the media, I started about 16 years ago. लेकिन I think I made up my mind कि मुझे मीडिया में काम करना है about 22 years ago. And it's been amazing because उस दौर में मुझे याद है हमारी इंदू बनकर आई थी, okay? करिश्मा तन्ना इन अ वेरी वेरी फेमस शो जिसका नाम था क्योंकि सास भी कभी बहू थी. द रीजन आई एम सेइंग दिस एंड यू विल फाइंड आउट इज लेटर, बट फॉर राइट नाउ मेरे शो पर, मेरे काउच पर, यू नो, स्कूप के बाहर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा. थैंक यू रोहिणी, थैंक यू. You know, the reason I'm saying this is because I told you this the other day also कि मैं तो तुम्हें तब से जानती हूँ. There's a beautiful familiarity because I remember उस दौर में भी जब आपने एंट्री की थी, it made an impact. Right. It's been over 20 years, Karishma, that you have been working. Yes. And as a girl who works in the media space, I identify with that. So this interview is going to be about asking you what keeps you going, all right, in so many years. So let's start off with today, which is congratulations on Scoop. Thank you. हमने ये इंटरव्यू करने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त की, बहुत सारा कॉल किया मेखला और मैंने एक दूसरे को, लेकिन इट्स बिन बिजी, राइट? राइट, टोटली. पिछले कुछ हफ्तों में क्या हुआ है? क्या हुआ है? जिंदगी कैसी बदली है करिश्मा तन्ना की, पहले ये बताइए. ये मेरी जिंदगी थी. हाँ. ये मेरी लाइफ चल रही थी. आफ्टर स्कूप इट्स टेकन अ 360 टर्न. Really? टोटली. आई मीन जो रिस्पॉन्स मुझे मिला है ये शो के बाद, इट्स लाइक मैं इतने मैसेजेस पढ़ रही हूँ, सोशल मीडिया पे विशेस पढ़ रही हूँ, एंड पीपल आर एक्चुअली मेकिंग मी फील दैट हाँ यार, आई मीन ये लोग सच बोल रहे हैं. यू नो, कमेंट्स लाइक करिश्मा इज अ रेवोल्यूशन, करिश्मा 2.0. आई मीन व्हाट टुक द इंडस्ट्री टू recognize her talent. Where was she all this while? Why was she not given the right due? And good things that, you know, she's holding the scene, she's holding the show. So एक एक्टर को जब ऐसी कॉम्प्लीमेंट्स मिलती है तो यू जस्ट फील दैट जो मेहनत की है मैंने इतने सालों में, वो आखिर में यू नो रंग लाई है. सो आई फील गुड. भले देर से आया, बट आई एम हैप्पी दैट इट केम. देर आए दुरुस्त आए. टोटली. लेकिन आई मस्ट से दैट आई डोंट थिंक कि देर आए, बिकॉज इस दौरान यू नो जो ये वेटिंग पीरियड होता है बिफोर समबडी हैपन्स, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपना जो मेंटल हेल्थ है उसे चेक में रखना, काम करते रहना और हिम्मत नहीं हारना. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज 3 things. द फर्स्ट थिंग इज अ मेंटल मेकअप ऑफ एन आर्टिस्ट और एन एक्टर बिफोर दैट ब्रेक हैपन्स. वॉज इट टफ? मतलब क्या वो दौरान, वो जो पीरियड है, वेटिंग पीरियड है, क्या वो हार्ड था तुम्हारे लिए कभी? जो वेटिंग पीरियड होता है ना, वो हर एक एक्टर के लाइफ में आता है, यू नो रोहिणी, बिकॉज इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन एक्टर्स लाइफ, यू नो, बिकॉज एक अच्छा अगर प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में आना होता है ना, तो उसको कम से कम 3-4 महीने तो लगते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, इफ यू वांट दैट गुड प्रोजेक्ट टू कम योर वे. अगर बहुत सारे करने हैं तो आप बैक टू बैक कर सकते हो. करेक्ट. बट इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक्टर्स लाइफ टू जस्ट वेट फॉर द राइट प्रोजेक्ट. उसमें अगर आप you know, you feel dejected or you feel demotivated or you feel negative, you know, anxious, उससे कैसे आप overcome करते हो is an actor's job. आप कुछ भी कर लो, you listen to music, I play with my dog, I talk to my mother, that's how I overcome it. And also patience. You need to have positive mind, you need to have patience. In my life, what I experienced is hope. I don't know, it's just my nature to have hope. मतलब मैंने कभी हार नहीं मानी है. मुझे पता था कि yes, बहुत you know ऐसे when I used to like be more ahead in my career, I'm like 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, and I was always a brand. मुझे लगा कि this industry has given me a name, which I'm happy, but I wanted that hard hitting one show where I take that circle of acting and say that okay, you know, now I've proved myself as an actor. So I was waiting 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल. But I always had this hope. एक होता ना, आपको आपकी एक लाइफ जर्नी दिख रही है और दूर किधर एक होप का एक लाइट है जो है, पर मुझे पता है कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, पर कब आएगा वो
that that bubble which is there. I Yeah. can see that dim light, but I'm not reaching there yet. So that hope is there, that I can see it from far. I just have to go closer to it very, very soon. And with positive mind, with manifestation, with just talking to myself, with that hope that it'll come. Don't lose patience, don't lose your mind. All these thoughts actually just gives you what you actually deserve. Correct. So I felt, and I've experienced that, Rohini, that if I keep my mind sane, and if I genuinely believe in myself, things will happen. Amazing. And I've Amazing. really experienced it firsthand. Absolutely, and I think it's amazing because there are two things. आप ही की शो का line है आपके last episode में. It's one of my favorite lines, which is that ज़्यादा hope भी कोई अगर hope ना हो उतना ही dangerous होता है. So it's like hope में भी Having no hope is as dangerous as having hope. as having too much hope. Too much hope, yeah. Oh my God, and I think it's beautiful. Yeah. लेकिन to answer the question जो fans पूछ रहे हैं कि इतने सालों से where was she, लोगों ने discover नहीं किया, उसका जवाब है आपके पास. Like, what are you the sort of person, मुझे जानना है. Are you grateful for the guys who did give you the opportunities, all the brand that you were able to build, or do you at this point turn around and say मैं तो हमेशा से तैयार थी. I mean, of course, मैं हमेशा से तैयार थी, पर I am not the producer. I am not the director. I mean, someone has to see that thing in me, and I don't blame them. I mean, there is no time, और किसी के पास इतना time या patience या risk लेने का appetite नहीं है. So I totally understand. That's why people say it's all about the chance and being at the right place at the right time. वो आता है, and it just aligns when it's meant to be, when it's meant for you. It just happens beautifully. Everything just aligns. तो मुझे लगता है हर अच्छी चीज़ को वक्त लगता है, और हर अच्छी चीज़ मिलती है जब आपके नसीब में होता है. And I'm saying it not because some philosophical Karishma Tanna is happening here, but I have actually felt it. So I'm saying it, Correct. that time laga mujhe. And yes, I was ready 10 years back probably. I was ready when I started my career. But it should come. बिल्कुल. And I'm not blaming anybody. I mean, it just didn't happen for me. Maybe I didn't do the right projects, or maybe they didn't see me the way they were supposed to see me, or maybe I didn't work that hard. I don't know. Beautiful. किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता. बिल्कुल. I feel like, looking from the outside, as someone who's just known you as an actor, because I will not claim to be a friend of yours or known you for many years, but I feel that there are two things that stood out in your journey. One is, of course, the fact that you got married, and I think that it's beautiful to have and find love. It's very important. Yes. Because ऐसे नहीं है कि हम लड़कियां जो हैं हमको ये करियर वाली लड़कियां जो हैं उनको ये वाला नहीं चाहिए. We crave the same thing. Of course. And then of course at the same time there's scoop. So मुझे timeline जरा बताओ कि कौन किसका शगुन बना पहले. हंसल बने या वरुण बने? When I just started dating Varun, simultaneously ये बातें चल रही थी. मतलब when I was dating Varun, मेरा Amazon का शो हश हश, उसकी प्रेपरेशन चल रही थी, उसके डायलॉग्स और वो सब चल रहे थे. So Varun was already in my life when I was doing हश हश. उसके बाद मुझे शो जैसे हश हश ख़त्म हुआ, शूट ख़त्म हुआ, उसके आई थिंक 2-3 महीने के बाद मुझे मुकेश छाबड़ा ने फ़ोन किया था और बोला था कि एक शो है जिसके लिए मैं ऑडिशन करना चाहता हूँ, एंड यू कम टू दी ऑफिस. मुझे कुछ पता नहीं था. व्हेनेवर मुकेश छाबड़ा कॉल्स, आई जस्ट रीच. मुझे वो प्रोजेक्ट मिले ना मिले, आई हैव टू गो देयर बिकॉज आई जस्ट लाइक हिम, एटलीस्ट ही इज हेल्पिंग मी. एंड आई रीच देयर एंड ही गिव्स मी ये 2 सीन्स है, यू हैव टू जस्ट परफॉर्म एंड ऑल दैट. आई एम लाइक, अरे ये तो गुजराती में भी है. सो देन आई गेट टू नो दैट ओ द कैरेक्टर इज गुजराती ऑल्सो, शी इज अ क्राइम रिपोर्टर एंड ऑल. After doing the scene, he's telling me it's for Hansal Mehta and Netflix. And I'm like, I love Hansal Mehta. I love Netflix. I have to do the show. I don't care. So I start manifesting. I'm like, oh, we wish I get it and all that. And I'm shortlisted, and then simultaneously I'm telling Varun, I'm very tight-lipped about my work, everybody is, Yeah. Till it doesn't happen, I don't talk to my mother, I don't talk to anybody. My right hand doesn't know what my left hand is doing. It's that
tight-lipped. क्या बात है? हाँ. That's a skill, huh? Yeah, so I don't, and but I don't know, for some reason I just felt like telling Varun that, you know, I gave a very important audition for Hansal Mehta and Mukesh Chabra auditioned and all that. I just hope I get it. You know, for the first time I just felt like telling him. और मैं ऐसी ओपन हूँ नहीं, मैंने बोल दिया, इज लाइक आई होप यू गेट इट, यू नो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड दिस एंड दैट. फॉरगॉट अबाउट इट. फिर मैं ट्रैवल देहरादून चली गई थी हॉलीडे पे उसके साथ, बिकॉज वी वर ऑफ कोर्स डेटिंग, कोर्टशिप चल रहा था, ये वो. I get a call from Mukesh Chabra, you're shortlisted for this. And I'm like excited, but I don't want to show my excitement because, you know, I don't want to tell anybody. Jinx nathi karu. Correct. So he's like, what happened? I'm like, I think I'm shortlisted, but let's see. Again, I don't keep my hopes high. मैं बॉम्बे पहुंचती हूँ and then Mukesh Chabra is like, come to the office. So I go to the office and then he's like, you've got the part, but just relax. And I can't relax. I'm like, I am like, dude, this is like the biggest show of my life. You know, it's author-backed role. Like, this is like a dream role for anybody. And when I get to know that it's like a, you know, a protagonist, like the main protagonist role, I'm just dancing. I don't have my feet on the ground. I'm just dancing and all that. And then I finally tell Varun that I've got the role, and he's like, what? Are you serious? So I feel Varun is definitely lucky in my life that, you know, once I've met him, I've started feeling happy. And then, I don't know, from the time I met him, I knew he's the one. So what happens, Rohini, when you are with the right person, your state of mind is so good that happy thoughts come in your mind. Yes. And with that happy thoughts, you're manifesting. Yes. You know? Absolutely. So everything just aligns beautifully. I'm only attracting good things in my life because I feel Varun is, you know, the best partner for me. So my state of mind is happy, and in that I'm wishing for a good career. Beautiful. You know, and that's what I feel attracts, Yes. you know, your prayers. All of it. ये vibration So you की have बात to be होती in है. that happy state of mind and stop expecting. And I was in that, and that's when things started changing in my life, and I'm like, wow, so this is what manifestation means, that you have to be in a very non-expecting space to just manifest. And yeah, and then I got this, and then when I told Varun that I've got it, he already took my autograph. He's like, you know what, I know what the show is, I know what the role is, just give me an autograph. And he just made me sign it on his, you know, that note you get on your phone. I just signed it, and I'm like, this is it, this is my autograph. So cute. And so he already knew that the show is going to be a hit, and he believed in me, you know. And then when the shooting dates were announced, that was in December, and Varun proposed to me in November. So I'm like, oh, proposed to me, मतलब मैं तो शादी जल्दी कर लूँगी. I'll तो फंसाओ हम भाई, engagement हो गई है, you proposed to me, शादी तो जल्दी करनी है, I don't have the time. So we decide of 5th Feb wedding date. अब मेरा जो स्कूप शूटिंग है दिसंबर से जैन हो गया. अब my heartbeat is like, oh my god, it's closer to my wedding. How will I manage everything, you know? And I have like big lines, big dialogues I have in the show where I'm almost there in all the scenes. I'm like, oh, I need time to prepare. और क्या mental state होगा Mental state, मतलब I have to juggle, it's my wedding. Yeah. And I'm like, oh god. This is the scoop. This is the scoop, guys. कि ये शो करते वक्त करिश्मा was actually getting married. Yeah. मतलब you know, मतलब what are the odds? This is like the biggest show of my life. Wedding is the biggest thing in my life. I'm like, two big things are happening simultaneously. और हम लोग ने फिर जैन एंड में 5-6 दिन शूट कर लिया. तो मतलब सीन खत्म हो रहे थे, एंड देन आई एम लाइक टॉकिंग टू माय स्टाइलिस्ट, टॉकिंग टू माय डिजाइनर, टॉकिंग टू माय यू नो हु इज डूइंग माय डेकोर. आई एम लाइक ये करना, वैसे करना, कट, हाँ नेक्स्ट सीन, फिर वापस प्रिपेयर करना, ओ माय गॉड नेक्स्ट सीन क्या है. सो आई हैव डन इट लाइक दैट, व्हिच वाज यू नो वर्किंग फॉर मी बिकॉज आई वाज इन दैट you know zone. Yeah, no, also newsroom was like that. You have to be like fast, you know, fumbling, ये देखिए, overlapping. ये बेसिकली मुझे बोल रही है कि ये जो इनका जो कैरेक्टर है वो इनके रियल लाइफ में काम आया है. हाँ आया. And one day I just broke down because I was fumbling and I was forgetting lines because I had so much on my mind, and I generally don't fumble. Yes. So I started crying
And I just told Hansel, so I'm like, sir, I want to speak to you. I'm like, sir, I'm generally not like this. I'm very well મારું prepared. બહુ ચાલે છે હા હમણાં. બહુ અને ગુજરાતીમાં I was અને saying મારું માથામાં હમણાં બહુ જ બધું છે. Correct. Lot of things are happening. So sir, ખાલી ये schedule मुझे संभाल लो because I'm just getting married in like 6-7 days. He's like, don't worry. Do whatever you want to, act however you want to. I trust you. This is your show. You do the way you want to. I have full confidence in you. And I'm like, okay, let's come back. love her. I love her. And then I just managed somehow, and I just kind of, spoke to myself that this is it. You have to manage both, and God has given you like a beautiful husband, and God has given you a beautiful show. You have to manage both. So I'm like, okay. So newsroom schedule was very important. Then sir of course gave me a break of like 10 days where I was getting married. मुझे बोला गया था कि मेहंदी नहीं लगाना क्योंकि कंटिन्यूटी है. एक टपका लगाना खाली. ओए हाय 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 हाय. Allah very sorry हो रही है. And then I'm like okay. Then when मेहंदी डे happened, एक टपका से थोड़ा और आया, थोड़ा से इधर आया, इधर से इधर आया, इधर तक मैंने मेहंदी लगा दी. Sir का हार्ट बीट, everybody on the set because they're seeing it on social media. Everybody's like, fuck, Karishma's put this much mehendi. लगा दी उसने मेहंदी. Oh my god. Oh my god. And I'm like, sorry, I'm very sorry, but I just, I'm getting married. It's my first wedding and hopefully last, बिल्कुल बिल्कुल. Yeah. So I'm like, please, sorry, maaf kar do mujhe, and all that happened. And then they're like, yeah, just chill, just relax. And sir was so supportive. So I'm like, just enjoy the wedding right now. Just enjoy. Happened. Cut to after 5 days, I am reaching on the set with dark mehendi. प्यार भी तो बहुत है. ये होता है ना कि जितनी मोहब्बत उतना रंग. ये है. मतलब सबको खुश होना चाहिए, सब खुश थे, बट मेहंदी व्हाट डू वी डू. फिर मेकअप लगाया, मतलब माय मेकअप आर्टिस्ट हैड टू टेक 2 hours to put thopo makeup. So you'll there are a lot of scenes but I don't remember now. Full makeup के साथ है. Oh my god. Full on makeup and they made me wear like full clothes and all that. कैसे भी मैंने एक शेड्यूल खत्म किया. इट्स ओके. तुमने सिर्फ मेहंदी लगाया. यहाँ पर ऐसे कई किस्से हैं जहाँ पर एक्ट्रेसेस प्रेग्नेंट थी और उन्होंने पूरी फिल्म शूट कर ली और लोगों को पता भी नहीं चला. यहाँ तक शॉट चल रहे थे. हेमा जी के यहाँ तक शॉट चल रहे थे सत्ते पे सत्ता पे because she was pregnant. She was pregnant at that time. But wow, yeah, and then that's it. They gave me a break. मेहंदी रोज वैक्सिंग चल रही थी, रोज घिसम पट्टी चल रही थी. All that happened. Then फिर finally after 20 days I resumed. Oh my god. I mean, I don't know of this story, but thank you for sharing such I've actually not told anybody. No, but thank you for sharing such an intimate part of your life. Yes. Because immediately, it still strikes me that here you are, a girl who is working hard. Yes. And we want, ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ काम कर रहे हैं यार. हमको मोहब्बत भी चाहिए, हमको शादी भी चाहिए, हमको सक्सेस भी चाहिए और ये सारी चीज़ें एक साथ हो सकती है. सिर्फ मैनेज करना पड़ता है. वो हंसल जी जैसे कोई सर हो तो अच्छी बात है. तो एटलीस्ट यू नीड द सपोर्ट ऑफ पीपल अराउंड यू. अगर कोई डायरेक्टर होता जहाँ बोलता दैट आई मीन इट्स नॉट प्रोफेशनल या और दिस इज नॉट माय लुकआउट देन बट हंसल सर वाज सो सपोर्टिव. माय गॉड. इट्स अमेजिंग. थैंक यू फॉर दैट. आई ऑल्सो बिलीव कि आई सॉ अ ट्रेजेक्टरी विद इन द शो. जब हम पहली बार मिले मैंने सिर्फ 4 एपिसोड देखे थे और एंड यू वर वेरी एक्साइटेड एट दैट पॉइंट. यू सेड बाकी के देख लो. एंड आई अंडरस्टूड लेटर जब मैंने एपिसोड 5 और एपिसोड 6 देखा मुझे लगा एज एन एक्टर आई डोंट नो इफ यू शॉट द एंटायर शो लीनियर, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आई फेल्ट देयर वाज दिस अमेजिंग ग्राफ ऑफ यू बिकमिंग अ बेटर एक्टर with every episode. Personally तुम्हें वो ग्रोथ का एहसास हुआ एज एन एक्टर एज वेल? यस. लीनियर वाइज हमने शूट नहीं किया पर एज एन सीन्स लीनियर वाइज शूट नहीं किए बट मतलब एपिसोड ओवरऑल 1-2 टुगेदर. न्यूज रूम भी स्टार्टेड फर्स्ट, देन वी स्टार्टेड हाउस सीन्स. जितने भी गुज्जू पार्ट सीन्स थे वो फर्स्ट एपिसोड के भी होंगे तो हमने मिडिल शेड्यूल में किया. एंड जेल सीन थर्ड किया. पर जेल में जितने भी सीन्स थे वो लीनियर किए, because sir wanted my soul to feel humiliated. The frisking scene, if you saw, that was shot first. जेल में एंटर किया हमने, we saw the full jail and it looked so real and all that, and sir said we are doing the frisking part first. He didn't tell me why. He just wanted me to feel organically humiliated, my soul to feel naked. For him to feel that why Jagruti Pathak is here.
what have I done that I have to, rip my clothes apart? Like someone is ripping my clothes apart for what? What have I done? Yeah. So he wanted me to feel vulnerable. And there was nobody on the set when he did that. He's like, you just do the way you want to. I want you to feel comfortable. And of course, Rani madam, jo meri jailer hai, she did a fantastic job to, humiliate me. Chal nikal and all that, So he did that jail sequence linear wise. So because I was already vulnerable and humiliated, those scenes became easy for me to perform, that I can relate to this character, so the audience can relate to this character. Yeah. So शुरुआत में ही अगर ऐसे हो गया तो हर सीन उसके बाद का उस मेमोरी के साथ चल रहा है. correct. Yeah, that's amazing because I think in the last वाले एपिसोड में 2 मोमेंट हैं that just rip my heart. एक तो वो मोमेंट जहाँ पर वो बोलता है कि आपको बेल मिल गई है. उस सीन के बारे में मुझे बताओ करिश्मा, बिकॉज उस सीन में वो रिएक्शन लाना, आई मीन हम सब ने एक साथ, आई थिंक आपका रिएक्शन नेटफ्लिक्स के सामने किया होगा. frankly, रोहिणी, मुझे मैं कभी मैं भी रिवाइंड करके देखती हूँ कि मैंने ये सीन किया, बिकॉज डायलॉग नहीं थे. जब आपके पास डायलॉग नहीं होते ना बोलने के लिए, और सिर्फ आपको अपने एक्सप्रेशन के साथ खेलना होता है, एंड होल्ड द सीन इज वेरी डिफिकल्ट. डायलॉग्स होता है तो लिप मूवमेंट, डायलॉग तो क्रच होता है. बिल्कुल, करेक्ट, बिल्कुल. पर जब आपको एम्प्टी सीन में खाली एक्सप्रेशंस दिखाने हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. और जब मैं सोचती हूँ तो कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया, आई थिंक आई वाज जस्ट, क्योंकि ये जर्नी जागृति पाठक ने जी थी, एंड वी वर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शेड्यूल. और जो मैंने जेल, अगेन लीनियर, सर ने वो सारे सीन्स कर लिए थे. तो जो जेल में मुझे खाना नहीं मिलता है, नाना के साथ बात करती हूँ, भावेश के साथ जो भी बैंटरिंग चल रहा है, और फिर टुवर्ड्स द एंड लास्ट डे था हमारा जेल का वो, और सर ने वो लीनियर वाइज ही लास्ट किया. तो क्योंकि मैं इतनी भरी हुई थी विद ऑल द थिंग्स, विद माई सक्सेस, देन टॉकिंग टू माई सन, देन मीटिंग नाना मामा, एंड देन भावेश को मैं फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर बोल रही हूँ नहीं मिला ना बेल. एंड दैट्स व्हेन फर्स्ट टाइम आफ्टर 9 months ऑफ लिसनिंग टू अ पॉजिटिव आंसर कि हाँ मिल गई, आई फेल्ट दैट. एंड सर डिडंट टेल मी एनीथिंग कि कैसे करना है, क्या ग्राफ पकड़ना है, ऐसे करना, ये बात पे रोना, कुछ नहीं बोला सर ने. Just feel what you feel like. And he just left it to me. And I remember sir gives that respect to an actor where he makes everybody silent around you. And he doesn't say, chalo haan, ready. Aisa he doesn't say anything. He just makes 2 actors stand in front of each other. And just silently he says action. And whenever you want to start, whenever you feel that the emotions are coming and you're feeling the character, that's when the actor starts. Wow. So it was I remember it was a one take. He didn't, because he also believes that when you take 2-3 takes of the same thing, that same emotion doesn't come. जो first emotion आ जाता है ना first take में, वही होता है. बिल्कुल, बिल्कुल. And there are so many emotional scenes where everything, whatever you see with my nana, whatever you see with my mama, or wherever I'm crying, those are all one shots. First shot में he's got it. Okay. First shot में I have felt it. क्योंकि second, third shot में फिर आप ग्लिसरीन ले रहे हो. First shot में आपको real मिल जाता है. None of the emotional scenes you see, Rohini, I've not taken glycerine, because I've felt each and every character, because he makes the ambience like that. Correct. To get a right director to do this kind of role and this kind of story, it's a blessing, trust me. Absolutely. मुझे बताओ अब what is exciting for you? Because मैंने कहा जिंदगी ऐसे बदल ली ना, यहाँ ये थी तुम्हारी जिंदगी, वो ऐसे हो गई है. कैसे हो जाती है ऐसे? बिकॉज बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, इंटरव्यूज चल रहे हैं, प्रमोशंस चल रहे हैं. मेरा फोन क्रैश हो गया था जिस दिन रिलीज हुआ. मतलब मैं फोन रख रही हूँ, आई एम टॉकिंग, एक सेंटेंस फिर उठा रही हूँ तो 50 मैसेजेस. आई एम लाइक वाओ, दिस इज द मोमेंट आई वाज लिविंग फॉर. इट वाज अ ड्रीम. I'm still dreaming, I feel. And I just one day, after 5 days, I called, of course the day it released, I called up Hansel Samle, I called everybody, Zishan, Harman, everybody. I'm very excited, the show's releasing today and all that. I'm like a small child in a candy shop, जिसको like एक्साइटमेंट है. एंड हरमन एंड जीशान लाइक हम लोग देखेंगे जब देखना होगा, यू रिलैक्स. आई एम लाइक हाँ ओके फाइन, आई एम वेरी एक्साइटेड. नॉट माय, मेरा वाइब मैच नहीं कर रही है. अंसल सर को फोन कर अंसल सर आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ऑल.
And then when I got the response, I think after 5 days I called him and I just cried. And so like, hello, are you crying? I'm like, yes sir, I'm crying. I was choked. Then I'm like, thank you for giving me this opportunity and the confidence you had in me, which nobody could have, had. And you believed in me and you fought against all odds and you gave me this part, because you saw my audition and you thought that, she has the potential. She has. But it's crazy. ये शो के end में there is a montage of हाँ, आपने देखा ना? हाँ. And by the time I've seen so much of you, तो जब वो montage आता है जो असली जिग्ना बोरा का, उनकी जो images आते हैं, I could see you in that. Correct. अगर मैंने जिग्ना बोरा की images पहले देखी होती तो शायद मैं ढूंढती कि नहीं इनमें क्या similarity है. लेकिन I just come off the season and then I watch her and then I could only see you. Then I can't see anybody else. And I thought that was a great thing because small things like that really make a big difference. Small things यही तो इसलिए हंसल सर didn't want me to meet जिग्ना at all. उन्होंने बोला कि I understand कि ये रियल कैरेक्टर पे आधारित है, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उन्हें मिलो या उनके हाव भाव देखो या वो कैसे बात करते वो देखो. आप अपना कैरेक्टर खुद बनाओ. मैं आपको एक स्लेट दे रहा हूँ, यू पेंट इट द वे यू वांट टू, यू मेक योर ओन ग्राफ. आई वांट जागृति पाठक का रोल आप बनाओ, एंड ही गेव मी सो मच लिबर्टी कि मैं जिस तरीके से बिकॉज जब एक डायरेक्टर आपको लिबर्टी देते ना तब आप अपना ग्राफ या अपना खुद बना सकते हो. बिल्कुल. एंड जैसे आपने बोला ना कि हाउ डिड यू मैनेज टू टेक 1111 लेवल अप, इट्स बिकॉज ऑफ दैट कि जब आपको लिबर्टी मिलता है तब आप जो सीन कर रहे हो उसके पहले का सीन क्या हुआ है, उसमें मैंने क्या ग्राफ पकड़ा है, इसके बाद जो होने वाला है उसमें क्या पकड़ूंगी, क्या पिच पकड़ूंगी, वो सब आपको लिबर्टी जब मिलती है तब आप करेक्ट अपना टैलेंट दिखा सकते हो. करेक्ट. व्हाट हैज बीन द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आया हो, या तो टेक्स्ट पर या तो इन पर्सन, जो सबसे खास आपकी मेमोरी होगी ऑफ दिस फेज, मुझे बताइए. I have got lot of love on social media. Vidya Balan ma'am called me and I of course didn't have her number, and I remember I was talking to Varun and suddenly I get a call, unknown number, and I have not picked up because हम नहीं पिकअप करते unknown number. Because का क्या मतलब है? Yeah. And then she immediately messages me and says that, hi Karishma, this is Vidya Balan, please call me back if you have a moment. And I'm like, Varun, I'll call you back. Vidya Balan just called me. And I call and I am like in awe, in disbelief, whatever. I'm like, yes ma'am. And then she talks about, my show and the kind of acting I've done and all that. So I was literally, I had tears of joy, कि she spoke to me at length. Her husband spoke to me at length. Mahesh sir called me. Anurag Kashyap sir called me. So I have got such good response that I'm just happy. I'm in a happy space. Good, touch wood, and I hope that it continues forever. Thank you. But happiness is such a poison, यार. It is. It is. है ना? Yeah. क्योंकि अब आदत. क्योंकि अभी आपको फ्यूचर लहू मुँह लग गया. है ना? खून चख लिया है शेरों ने. वही तो अब सब पूछते अब क्या? अब क्या? हाँ. पर मैं सबको यही जवाब दे रही हूँ कि मुझे genuinely नहीं पता अब क्या. I am just living in the present. I'm enjoying this moment. I'm just कि ठीक है ये मुझे मिला है, मैं इस ये एंजॉय करना चाहती हूँ, फ्यूचर देखा जाएगा. आई मीन आई एम गेटिंग ऑफर्स एंड ऑल दैट, बट आई विल सी. आई होप यू आर, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों से इस काउच पे बैठ के बातें की हैं. हाँ. और उन्होंने मुझे बहुत टाइम बाद बोला है कि रोहिणी वी मेट ड्यूरिंग दैट टाइम, उसके बाद 6 महीने तक मेरा फ़ोन नहीं, इट डिडंट बज़, बिकॉज सडनली पीपल वर कन्फ्यूज. उनको पता नहीं था मैं अभी क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ. एंड आई फील दैट it's so unpredictable, this game. Yeah, it is. But I feel of all the people I've sat on this couch with, that if there's somebody who'll crack it, it's you. Especially ये जो road map है, until now का ठीक है, congratulations, लेकिन इसके बाद का, because I feel कि कहीं ना कहीं this is a path that you're walking. इस path पे honestly इससे पहले कोई चला नहीं है, I mean, I remember seeing you in Big Boss, मुझे याद है. And at that point, I was like, yeah, cool. And then I saw you in Scoop, and I was not surprised. I was like, yeah, cool. Because I feel that एक चीज़ है तुम्हें, which is तुम्हें सिर्फ काम करते रहना है. हाँ. क्या ये सही होगा बोलना? Totally. अगर काम है तो मैं खुश हूँ. It's like my second nature. I love to work. और
इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, अभी भी मुझे इतना सीखना है, अभी भी मुझे इतना पैशन है, अभी भी ऐसे दिमाग में नहीं आया कि बस अब हो गया है, अब ठीक है ना, अभी जब आएगा तब आएगा, नहीं, अभी भी मुझे इतना हंगर है फॉर दिस, तो काम करते रहना तो डेफिनेटली है मुझे। एनी ड्रीम विश लिस्ट डायरेक्टर्स ये वो? लॉट्स यार, मतलब एपिसोड खत्म हो जाएगा। अच्छा, इतने सारे हैं? Yeah, I would love to work with a lot of directors and producers. I would love to work with Rajan DK sir. I would love to work with Sanjay Leela Bhansali. I would love to work with Nitesh Tiwari. I would love to work with Anurag Kashyap sir. बिल्कुल, Lots. बिल्कुल बिल्कुल. And I hope that all of those dreams come true. For right now, I just want to say that I was really happy because as I said कि मेरे लिए तो यार इंदू से लेके आज जागृति पाठक तक there is an entire audience जिन्होंने तुम्हारी जर्नी देखी है publicly. And for that audience, of course, this will always be special. So, congratulations on Scoop. Thank और मुझसे बातें करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. Thank you, Rohini. This is amazing. Hi, this is Karishma Tanna और मैंने अभी बहुत सारी बात की है on Scoop with Rohini. So please like, share and subscribe on Film Companion Local.